This federalism is derived from the means की which Latin word foedus, right? Foedus, which word Deus, main king of which word Latin. So now you have read about that in the past hearing. In the past hearing, you have read about how many nations? Belgium and Which Sri nation we Lanka. studied? Belgium, Sri Lanka. Belgium and Sri Lanka. So we are going to give the example. Okay, here come. Now let us give Mrs. Belgium that is the last step. Resolve the change made to the power of the central government and give this power to the regional government. You know the regions of different activity in the regions, French, German, and they have the control over that for the ruling over that. So for maintain of the unity and the security for the Belgium, what the Belgium government decided to do, the Belgium government amended its constitution 2 times. And after that, how many times? From where? What were the durations of that? From 1970 to 1973. 1973. And what was the final decision of that in the 1993s? यहाँ पे क्या हुआ था? Before the 1993, the central, when the power was given to the state government as well as the central government, but all the power of the state government was controlled by the central government of the Belgium. So what happens? Due to this, there is a lot of conflict between the central and the state government and between the Dutch and the French people of the Belgium. So at the last, in the 1993, Belgium government decided to give the maximum power to the state government, and state government is not subordinate to the, you have read about that? Central government. Yes. Central government. You have studied in the case of the Belgium. You have studied? Yes, ma'am. Yes. Accommodation वाले ने पढ़ाया कि the की central government, the state government are not subordinate to the central government. Okay. So this is given here कि the regional governments existed in the Belgium even earlier. मतलब Belgium में state government भी थी और central government भी थी. But what was the problems? They had their role, the power, but all this government and could be withdrawn by the central. But state government को शुरू में तो power दिया गया, बाद में क्या हो गया कि this power was taken central government. But the thing that took place in the 1993 was that the regional government was given power that were no longer depend on the central government. लेकिन बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया? All the power of the central government given to the state government, and state government will be not be subordinate to the central government. ठीक है? और उसका नतीजा ये हुआ कि till now the Belgium is a very peaceful nation. This can be proved that the Belgium, the capital city of Belgium is Brussels, that a headquarter of European Union. ठीक है? तो now is peaceful. ये कैसे हो गया? तो that इसमें क्या लिखता है कि the power is share. Power किसके बीच में शेयर किया गया? Between the state and central government. That means both are free. Both the government are free. Central as well as state, both are free. No one can be interpreted in the matter of others. So there is no chance of conflict. ठीक है? Or what you found that when the power was divided, but the state government are not free to enjoy this power, they have to do everything by the consult of central government. What you found that जब state government पास power था, लेकिन वो power को तब यूज करता था जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन ग्रांट करती थी. तो तुमने क्या पाया कि जब तक वहां पे सही ढंग से वहां पे पावर का डिवीजन नहीं था, तो वहां पे हमेशा क्या होता था? व्हाट वाज देयर वर लॉट ऑफ conflict. But when the power was divided, all are free in that area, so what happens? There is very peace. There is no chance of the conflict. ठीक है?
Now come in the second part. You have studied about the Sri Lanka also. श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा. वहां क्या दिया हुआ है कि the Sri Lankas continue to be the for all the practices for the unity system of the government. लेकिन श्रीलंका में आज भी वहां पे किस टाइप की गवर्नमेंट है? There is unity form of government because the Sri Lankan government is not ready to provide this right to the provincial or the state, क्योंकि वो तमिल्स को नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने सारा पावर किसके हाथ में रखा गया? ऑल द पावर in the hand of. So you found that what is going on there? There is conflict, civil war. There is no peace, no security in that. ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि what is the importance of federalism? If the power is shared, you have read about the power chapter. वही इसको स्टैंड कर दिया गया है. If the power will be shared among the different groups, different organs, different level of the government, then this state government or the provincial government or the constituencies, they can be easily work in their own area, and they can be enhance their own area without any hurdle, without any restrictions. If there is any restrictions, and जब restriction होगा तो क्या होगा? Conflict will be arises, or when the conflict will be arises, then unity will be destroyed and security will be challenged. Okay, so you found that if federalism is benefited or not? Benefited. ठीक है, तो यहाँ तो तुमने पढ़ा अभी पावर शेयरिंग के बारे में आया, अभी तो फेडरलिज्म के बारे में तो आया नहीं. अब यहाँ देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट in which the power is divided between the central authority and the various constituent units of the country. What is federalism? Where the power is shared among the किसके बीच में? Central government and power is divided between central government and various constituent assemblies, state government. Power is divided between central as well as state government. This is known as federalism. Okay. Usually the federations have the two level of the government. देखो फेडरेशन में कितने टाइप के गवर्नमेंट्स होते हैं? टू लेवल्स के होते हैं, सेंट्रल एज वेल एज state government. But in some part of the sum of the world, there is more than two tier of government. ये जरूरी नहीं कि फेडरल दो ही करो. यदि वो एरिया बड़ा है, वो नेशन बड़ा है, तो टू गवर्नमेंट इज सफिशिएंट फॉर देम? No government is sufficient. Like in India, you have this. What happens in the India? You have already read about that. कि Belgium, what is the size of Belgium? Half the state of Haryana. Or you know that smaller state of India, many state of the India is some nation of the world. It is also be bigger, some the state of the nation of the world. इंडिया के कुछ स्टेट तो इतने बड़े हैं कि वो वर्ल्ड के नेशन से भी बड़े बड़े हैं, है कि नहीं है? सो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज एबल टू कंट्रोल ओवर द पीपल ऑफ दिस एरिया? क्या एक स्टेट गवर्नमेंट पूरे एरिया में कंट्रोल कर सकता है? इज इट पॉसिबल? No, ma'am. नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, तो देयर विल बी नीड ऑफ द अनदर टियर ऑफ द गवर्नमेंट. जब बड़ा है, तो जब उतना बड़ा हो गया तो एक स्टेट गवर्नमेंट पूरे भाग में कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो वहां एक और गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसीलिए कहा गया है कि जनरली इन द फेडरलिज्म देयर इज, बट इन इट इज नॉट बी बाउंडेशन दैट कि देयर शुड बी द ओनली टू गवर्नमेंट. देयर विल बी द मोर देन टू टियर ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो. इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा है, यूजुअली हमेशा इन द फेडरेशंस हैव द टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. वन एट द एंटायर गवर्नमेंट होती है किसके? पूरे नेशन के लिए होती है. और एक गवर्नमेंट किसके लिए होती है? द अदर गवर्नमेंट इज, देखो, वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री,
that is usually responsible for the few subject of the common national interest. जैसे तुम्हारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, that is responsible for which purpose? The central government is responsible for entire entire nation. Like the defense, like the क्या करे foreign policies, ठीक है, like the currencies, that is going to be handled by whom? Central government. Central government. The other are the government at the levels either known as provinces or the state that look after must to day administrations of their state. और जो second government क्या होता है, वो कहाँ पे होता है? That is provinces. ठीक है, जैसे state government. So what is the responsibility of the state government? What they do? They क्या करते government? manage What the state government? क्या day to day Rule over the administration. state. ठीक है, rule over the state in the proper way, in such way that the people as well as that area will held. तो ये काम होता है तुम्हारा लोकल स्टेट लेवल. तो जनरली हाउ मेनी हाउस ऑफ two were another both level of the job so the state as the state in their area interest in matter of others. In the matter is not central government, Central and the government. central government cannot be interpret in the matter of state government. State government. ठीक है. In this sense, the federal state with the unitary मतलब क्या है? There is two type of the governments. एक होता है unitary government. You have found in the case of Sri Lanka. Unitary government में क्या देखा तुमने? What you found there? In case of the unitary government, all remain the hand of क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनिटरी फॉर्म में होता है. सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा. ठीक है, यदि पावर यदि दिया भी गया है स्टेट को, तो बट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी यूज दिस पावर विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि बोथ द गवर्नमेंट हैव द पावर एंड बोथ द गवर्नमेंट हैव द राइट enjoy their power in their own area and no one can be interfered in the matter of anyone. Is it clear? दोनों में डिफरेंस आ गया. यूनिटी में क्या होता है कि all the power of the nation will be remain in the hand of central government. If the power but this state है state के पास है, ये the power they are free to in this area and is free to do in this area. They cannot control power. इसे वो power पे control नहीं कर सकता. किस पे? इस पे. They are free. So federalism. Is it clear? Yes. So now, under the unit system, is only one level of government or the sub unit or unit to the government. या तो central government है, तो उसे अपने power को state government को दिया है. वहाँ पे state government जैसे मान लो भाई एरिया है, different level, ठीक है, but power cannot be utilized one. कब वो यूटिलाइज करेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट that always was under guidance of the pressure under of central federal. The state government under the pressure and the control of which government? Central government order to the provinces, the local government, but in the first government order the state government to do something. है ना? क्लियर हो गया कि नहीं? Yes. And has the power of its own for which it government means what is doing in area any this. ये तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट है, तो ये है इसके लिए आंसरेबल नहीं है. He has not the right to put question from them. इससे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है. Neither it has due to give the response to them. Okay? ये इसको आंसर नहीं करता. ये को है ये पावर जब तक इससे पूछ करेगा क्या कुछ हम इसको लिए रेडी होगा तो पूछेगा आंसर से पूछा हमसे अलग नहीं. ओके, ऑफिसर इज वन सॉरी should be the law different dimensions.
What about the other one? Please repeat. Was that we the people of India, we the people, we are living in the UP. Yes, ma'am. Yes. It is a UP. No, it is in India. हम लोग लेते हो ना कभी प्रेज पीपल ऑफ इंडिया वी नेवर से वी द पीपल ऑफ बिहार वी द पीपल ऑफ केरला वी द पीपल ऑफ यूपी बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट मीन्स either the UP government, either the central government, either the Bihar government, they rule over the which citizen? Indian. Which citizen? Indian citizen. India. So how many citizens? How many citizenship? One. Right. So यहाँ different tier of the governments. Are local government, are the central government. They rule over citizens. को हमारे ऊपर का रूल है, हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का भी है. गाँव जाएंगे हम कौन रूल करेगा बेटा? Local government. लोकल गवर्नमेंट करेंगे. ठीक है. अब हम बिहार में कहीं भी जाएंगे लेकिन हम यही कहलाएंगे. तो कहने का मतलब है कि वही रहेगा और उस पे हर अलग अलग गवर्नमेंट रूल करेगी. ओके. तो डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट्स govern the same citizen. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Same citizen, but each tier of its own jurisdiction. भले तुम यदि बिहार से जाकर यूपी से जाकर बिहार में सेटल हो जाते हो तो तुम किसकी बॉर्डर बाहर निकल के बेटा? यहाँ से यूपी या यूपी के. तो यूपी के ये इस एरिया में पूरे यूपी had the power in these areas. यूपी गवर्नमेंट बिहार में क्या भले you the people of India now the voice is better. Hello. Yes. So all the means ki the different tier of the government they rule over the same city, but the every tier's government have their own jurisdictions. अपना हर क्षेत्र बेटा who rule over that? UP government. And in the Bihar only the Bihar government have the right. In the Rajasthan government have the right. No any government can be interpreted in the matter of any other. Is it clear? Yes, sir. Yes, ठीक है. कहने मतलब कि all the governments can be rule over the same citizen, but the every tier of the government have their own jurisdiction. Jurisdiction means अधिकार क्षेत्र. हर टायर का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है. ओके. In specific matter of the legislations मतलब अपने एरिया में वो रूल करेगा. टैक्सेशन उस एरिया का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? दैट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रूल ओवर दैट एरिया ओनली दैट गवर्नमेंट हैव द राइट. बिहार गवर्नमेंट हैव नॉट बी राइट टू कम एंड रूल ओवर द यूपी. हु रूल ओवर द यूपी? ओनली द गवर्नमेंट ऑफ यूपी. हु कलेक्ट द टैक्स इन दिस एरिया? Who collect the tax in this area? Government of UP government. Who make the law in this area? Who make the law of the UP? UP government. Yeah. UP. Can the rule? Can UP government collect tax? Why? Why reason why? Because that is arbitrable. Because नहीं ये नहीं होगा डिवीजन नहीं. Because every tier of the government मेरे क्लास में now you take the example of your school difference. In class there how many section in your school?
My class, you can take the time. I will not give any decision regarding that. But the other one have not the right to take any actions regarding my class. Okay. This is, I have jurisdictions in my class. ये हुआ है, every tier of the government have their own jurisdictions. No one can be in physics. ठीक है, तो कौन तुम्हारी क्लास के बच्चों क्लास के बच्चों से होता है? जो कुछ क्लास का रूल रेगुलेशन आंसर ओनली आई कैन, तो ये होता है मेरा जुरिडिक्शन इस एरिया में, ठीक है। लेकिन इस क्लास के बाहर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। ओनली आई हैव द राइट ओनली इन दिस क्लासरूम। To lay the same way, the all the means that the government have the right to legislation means make the rule in these areas, collect the tax, they have the right. The action of the highest level of the tier of the government are specified in the constitutions. Every state's governments have rights are mentioned. कहाँ पे mention किया हुआ बेटा? Constitution. So existence and the authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed. इसका मतलब the right and the power of all level of the government is guaranteed by whom? By the By the Constitution. Okay, the power of all level of the government is guaranteed by the Constitution because it is mentioned into the Constitution. Okay, so how we can say that the power of all level of government is guaranteed. कैसे कहोगे guaranteed है? Because it is mentioned into the Constitution. How can they that? How the power of all level of the government? How is the power of all level of the government guaranteed? Because it is into the point is clear. Yeah. The fourth fundamental provision of Constitution cannot be unilaterally changed by the Constitution of both levels of government. You have read of that Constitution invention cannot be done by the single level of the government. यदि कोई हमको चेंज करना है तो सबसे पहले हम उसके करते हुए if you want to be changing कहाँ पे चेंज करेंगे? In the parliament passing the bill. नहीं उसको मत जाओ। हम कोई भी चीज चेंज करना चाहते हो सबसे पहले, क्योंकि हर चीज वहां पे मेंशन है, एवरीथिंग मेंशन वेयर Constitution. यदि हमें कोई चीज चेंज करना है तो उसको हम कहाँ पे चेंज करें पहले? In the Constitution. वेरी गुड। अब देखो, दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज द ओनली वन ऑफ द गवर्नमेंट। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू चेंज इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डू विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि क्या होता है, पार्लियामेंट में लॉ पे डिस्कशन चलता है, कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इट ऑल्सो एंड कोई चीज हटे तो दिस डिस्कशन Not clear. दैट मींस Voice is not audible. Yes, ma'am. Voice is not. क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट गवर्नमेंट के पावर को हटा सकती है? No, ma'am. No, ma'am. क्यों नहीं हटा सकती No, है? ma'am. सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कोई चीज हटाया जा सकता है? बाय द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कब होगा? हाउ द अमेंडमेंट विल बी हेल्ड? व्हेन द बोथ द गवर्नमेंट आर agree for that. Is it clear? अब समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Is it ma'am. clear this point? Yes, ma'am. Fundamental provisions of the constitutions cannot be used by a single government. Change by one level of the government. Change requires the consent of the both level of the government. मतलब ये कहने मतलब ये है कि the सारा power, the power related to the all level of the government that is mentioned in the constitution. If anyone against of that,
no one can be exploit their power from the constitution. क्यों? कि constitutions can only be changed by the consent of both level of the government. This point is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो कोई भी गवर्नमेंट Yes, ma'am. किसी के पावर को खत्म नहीं, क्योंकि सारा पावर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन निकाल देंगे तो गारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई निकाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बिना दो एग्रीमेंट के उस लॉ को निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट थिंग, कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशंस and the power of the different level of the government. Already know as कि who is the protector of the constitution? Judiciary. Judiciary. And suppose if any conflict arises between the state government and the central government, who solve this problem? Judiciary ही कर सकती है। So the highest court act as umpire if the dispute arise between the different level of the government in the exercise of their respective power. अभी तुम्हें देखना होगा कि अभी बहुत जल्दी, जैसे यदि कोई भी conflict arise होता है, if any conflict arises between the two state, or between the central government and the state government, who solve this problem? Only the Supreme Court. जब दो स्टेट के बीच में प्रॉब्लम होगी तब सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगी। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, then the Supreme Court. If the conflict arises inside the local government and the state government, then the High Court will be solve this problem. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है। दो स्टेट के बीच में हाई कोर्ट नहीं सॉल्व कर सकती है, वो विल बी सॉल्व, Supreme Court. क्योंकि हाई कोर्ट क्या होता है, वो स्टेट लेवल पे होता है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, तो जिस हाई कोर्ट को होगा तो अपने फेवर में डिसीजन ले सकता है ना। Yes, ma'am. इसीलिए दो स्टेट के बीच में यदि झगड़ा है तो उसको झगड़े को कौन सॉल्व करेगा? Supreme Court. Supreme Court. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है तो कौन सॉल्व करेगा? वो विल बी सॉल्व Supreme Court. Supreme Court. But if the conflict arises inside the state, who solve? High Court. High Court. ठीक है। तो कोर्ट इसीलिए यहाँ पे किस तरह का चाहिए? Which type of the court should be there? जुडिशरी कैसा होना चाहिए? नहीं, जुडिशरी कैसा होना चाहिए? जुडिशरी शुड बी Divided into levels. जुडिशरी क्या होना चाहिए? Should be independent. Judiciary should be independent. It should not be remain under the control of legislature as well as executive. इसलिए जुडिशरी क्या होता है? फिर इंडिपेंडेंट होता है। Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट, द सोर्सेज ऑफ न्यू ऑफ द क्लियर फाइनल ऑटोनॉमी। जो इस एरिया का जो भी टैक्स रकम है वो will be from UP, who has government, and I saw that, and who tried to convince this? Who will convince? जो यहाँ who they both say जो tax तो यहाँ तो अब है it is not that who had a power to enjoy all these things. Enjoy. State government. So the income of this that only state government and government of that area is responsible for that, and they have the right over that. जो इस एरिया का है वो सकता है that the right by the cover that that metals have the dual object. यहाँ पे सुनो, how many objects are कितने objects? To guard and promote unity and क्या होता है? To promote the unity and security. यानी main object religions diversity nations, religious people are living in our country. All of you know. Not be divided. If the means the different type of the government is not be there, can the unity of this can be? They know that the northern India is totally because the culture of India. North India also has the right to rule over there. Or other India's people, other this in such a society of the nation can be. So give this for आगे पढ़ोगे कि means form on the top language on the basis बनाया है ना? So all the states have given to rule over. What is the reason of the conflict? Shankar क्या है कि the singles are not interested to provide this authority to Belgium government having the authority to all the provinces.
तो बेस लेकिन Yes, ma'am. Yes. सामंजस्य हो रहा है, जैसे बेल्जियम में वहां पे फ्रेंच थे, डच भी रहते थे, आपस में लेते, लेकिन जब ये फेडरलिज्म और जब पावर का डिवीजन हो गया, डिवीजन पावर ही तो फेडरलिज्म है, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे लोगों के बीच में क्या है, कॉपरेशन है, एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे कि नहीं कर रहे, तो वही है अकोमोडेशन। फेडरलिज्म का दो ऑब्जेक्ट होता है, व्हाई द मेन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मेंटेनिंग